the medicinal chemistry point of view. So we have already seen this sympathomimetics, sympatholytics from pharmacology point of view, and today we are going to see same chapter from chemistry point of view. So in this medicinal chemistry, what is important, I would like to highlight you. So first chapter from medicinal chemistry, that is nothing but the your drug design chapter. In that you are going to have USR parameters, that is important, and rest of the part absorption, distribution, metabolism, elimination, drug receptor interaction we have already covered in the pharmacology. So just at the end of the this maybe probably in the February end, I will take that remaining one chapter known as a drug design chapter from chemistry, medicinal chemistry, because on that also QSR parameters they are important. Electronic parameters, different parameters are there. Lipophilic parameters, electronic parameters, they are important for GPAT. Presently, today we will discuss this adrenergic drugs from chemistry point of view. So I hope you are able to see the screen properly. So what do you mean by sympathetic drug? Sympathetic or parasympathetic nervous system? We have already seen this sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. These are the two branches of your autonomic nervous system, particularly peripheral nervous system. Okay. So autonomic nervous system is classified into two: peripheral nervous system and then somatic nervous system and enteric nervous system. So out of that, autonomic nervous system is classified into two subtypes: sympathetic and parasympathetic. Sympathetic means also known as the adrenergic nervous system. Parasympathetic means also known as the cholinergic nervous system. Now these two systems they work in the coordination manner. आवाज येत आहे ना? आवाज येत आहे का? These two systems they works in a coordination manner, and most of the time they have opposite effect on the various systems, various organs. Now these are the two important gifts from our God. So they are the gift of God to the human being. Why it is known as gift of God? Because sympathetic nervous system controls the different system like cardiovascular system, bronchial, smooth muscle, then muscular and metabolic effect of they control the muscular tone, metabolic effect. Because when you are under the any kind of threat, so your sympathetic nervous system that will be that will be dominated, or you will be under the influence of sympathetic nervous system, and there is a release of noradrenaline, so it will act on different organs. It will change the activities of organ. So that's why it is known as sympathetic. Sympathetic means sympathy, and when you need sympathy, when you are in a danger, you need a sympathy. Suppose in a jungle there is a tiger in front of you, so what will happen? So you have two choices: either you have to fight with the tiger or you have to run away from the tiger. So fight or flight. Sympathetic nervous system prepares you for fight or flight. So to run or to fight, you need a increased you need a you need a energy. So glycogen lysis will be there for fighting or flighting or fighting or running. You need a precise vision. So pupil dilation will be there, mydriasis. Okay. So for running purpose you need a, or for fighting purpose you need a more blood in the skeletal blood vessel. So skeletal blood vessel dilation will be there while fighting, while running. So if your peristalsis is there, so it is not desired one. अगर आप फाइट कर रहे हो, लड़ रहे हो या भाग रहे हो, तो उस टाइम पे आपको पेरिस्टाल्सिस नहीं होना चाहिए. That's why there is suppression of peristalsis, suppression of urination. Okay. So sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system, it prepare you for energy conservation. So after when you will come to home, and at that time there is no threat in front of you, so your actions will be different, opposite to that of the sympathetic nervous system. And neurotransmitter for sympathetic nervous system is nothing but the adrenaline or epinephrine, and most of the time it is sometimes at a particular organ only adrenaline, but it is a noradrenaline. Remember, neurotransmitter for sympathetic nervous system is a noradrenaline, also known as a norepinephrine, noradrenaline or norepinephrine. So sympathomimetics means they will mimic the responses produced by sympathetic nervous system, or they will copy the actions produced by noradrenaline. Okay. These drugs they will have structural resemblance. Resemblance means
structural similarity. These drugs, they will have structural similarity with the noradrenaline. That's why they produce the similar action like noradrenaline. Okay, that's why they produce the similar action like noradrenaline. Now, what do you mean by sympatholytics? Sympatholytics means these are the drug which blocks the actions of noradrenaline. ये block करेंगे. These which will inhibit the actions produced by sympathetic nervous system known as sympatholytics. Right? So these drugs clinically they are used in the hypertension, asthma, various allergic conditions. Because these drugs they are used clinically in the well, sympatholytics not of sympathomimetics. Sympathomimetics खुद ही hypertension करते हैं. Sympatholytics they are used in the hypertension. Sympathomimetics they are used in the asthma like alpha 2 agonist. In various allergic condition, adrenaline is a drug of choice in the anaphylaxis. So most of these drugs has intact or partially substituted amino group. तो ये जो ड्रग होंगे इनमें क्या होगा partially or substituted amino group, hence they are called as parasympathomimetic amines. These drugs are either ये इनके classes क्या होंगे we will see. These drugs are either catecholamines. Catecholamines means they will have catechol nucleus. These drugs are either catecholamines. इसमें क्या रहेंगे catecholamines रहेंगे. Okay, so what is catecholamine or catechol nucleus? So 3,4 dihydroxyphenyl nucleus. You can see over here this is known as catechol nucleus. 3,4 dihydroxyphenyl nucleus. Okay, so example of agent belonging to catechol or catecholamines. Adrenaline is there, which is known as epinephrine. Noradrenaline known as norepinephrine. Then dopamine is there. There are naturally occurring catecholamines. ये सब क्या naturally occurring है? Adrenaline, noradrenaline, dopamine. They are naturally occurring. Isoprenaline is a synthetic. Isoprenaline is also known as isoproterenol, which is a synthetic catecholamine. ठीक है याद रखना. Question आता है isoprenaline is a synthetic. Then these drugs may be either non-catecholamines. We have already seen from pharmacology point of view. So today just we'll discuss from same thing from chemistry point of view. So non-catecholamines they will not have hydroxyl group. So without hydroxyl group on the phenyl. Example is amphetamine and epinephrine. Amphetamine epinephrine जो है उसको भी अपन बोलते हैं sympathomimetic drug. Amphetamine epinephrine, but they are not having any catechol in the nucleus. That's why they are non-catecholamines. You can see the structure of dopamine over here. Dopamine का structure ये है CH2 CH2 NH2. Okay, ये catechol nucleus है. Noradrenaline बस addition of is OH. Adrenaline यहाँ पे OH की जगह मिथाइल ग्रुप है. यहाँ पे NH2 में मिथाइलेशन होता है. यहाँ N methyl transferase. So NHC NH. So just a difference between noradrenaline, dopamine and adrenaline. ठीक है. तो सबसे पहले dopamine बनता है. L-tyrosine amino acid is hydroxylated. Okay. And to convert into dopa dihydroxyphenylalanine. And dopa decarboxylase catalyze the conversion of dopa to dopamine. जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है यहाँ वो रिमूव किया जाता है. बाद में डोपामाइन बनता है. नाउ डोपामाइन से हाइड्रोक्सिलेशन होता है इसका बीटा हाइड्रोक्सिलेज. Dopamine beta hydroxylase will cause hydroxylation over here. You will get a noradrenaline, and N-methyl transferase enzyme will act on this noradrenaline to transfer a methyl group at this nitrogen. So adrenaline. Then isoprenaline dimethyl. Okay. So here dimethyl. You can say isopropyl group is added over here at the nitrogen. So isoprenaline. आइसोप्रेनालिन मतलब आइसोप्रोपाइल ग्रुप ऐड करना है आपको यहाँ पे. आइसोप्रेनालिन बाकी सब स्ट्रक्चर सेम. So catechol nucleus. All these are the derivative of catecholamines. Noradrenaline, adrenaline, dopamine, isoprenaline. Now we'll see the next. Catecholamines they are synthesized from L-phenylalanine amino acids. We have seen 2-3 times. Various enzymes participating in the biosynthesis. So first one is a phenylalanine hydroxylase. पहले क्या होगा phenylalanine अमीनो एसिड है उसको हाइड्रोक्सिलेशन होगा. देन बनेगा टायरोसिन. तो टायरोसिन बन गया. टायरोसिन का होगा टायरोसिन का भी हाइड्रोक्सिलेशन होगा. टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंड देन टायरोसिन से बनेगा डोपा.
डाइहाइड्रोक्सीफिनाइलानीन कौन करेगा? डोपा डीकार्बोक्सिलेज will convert dopa to the dopamine. बाद में dopamine beta oxidase will convert dopamine into noradrenaline. लास्ट में phenylethylamine और N-methyl transferase. Phenylethylamine N-methyl transferase will convert noradrenaline to the adrenaline. Now conversion of tyrosine to dopamine is a rate limiting step. I have already told you important rate limiting step in the synthesis of noradrenaline. It is a conversion of dopamine, okay, conversion of tyrosine to dopa, not dopamine. Conversion of tyrosine to the dopa. Dopa means dihydroxyphenylalanine. That is a rate limiting step in the synthesis of catecholamine. After the synthesis, it is stored in the synaptic vesicle and it is released upon the signal, that is a depolarization due to nerve impulse stimulation under the influence of calcium ion. Calcium ion brings about the exocytosis of this synaptic vesicle, exocytosis of this neurotransmitter from the synaptic vesicles. Now it is taken up by two reuptake. First one is known as a vesicular uptake, second one is known as neuronal uptake. Okay. And then it will act on a post-synaptic receptor. Some part of these neurotransmitters they are metabolized by enzymes known as MAO monoamine oxidase and COMT catechol orthomethyl transferase. We have already seen this. 3-methoxy-4-hydroxy mandelic acid is the principal metabolite or main metabolite. So we have already seen this in pharmacology. Just again I have revised. Okay, so phenylalanine, it is a structure of phenylalanine aromatic amino acid. उसका हाइड्रोक्सिलेशन होगा phenylalanine hydroxylase. So convert it into tyrosine. Hydroxylase मतलब यहाँ पे ऐड होगा hydroxylase. Tyrosine. Again tyrosine hydroxylase. So there is a hydroxylation over here also. There is no three-pore dihydroxy phenylalanine known as a dopa. That is converted into dopamine by decarboxylase enzyme. So removal of this carboxyl. Here is no carboxyl. Dopamine N. Okay. Dopamine beta hydroxylase will convert dopamine to noradrenaline. So here at a beta position, hydroxylation of hydroxyl group is there, known as a noradrenaline. To that N-methyl transferase. So we will transfer methyl group to the amine group to form a adrenaline. These are the steps. Few actions of catecholamines we have already seen. क्या actions होते हैं इसके आपको अच्छी तरह से मालूम है. Excitatory reaction on the cardiac, excitatory reaction on the smooth muscles of blood vessels and sweat glands. Inhibitory action on the smooth muscles of GIT, bronchial tract and skeletal blood vessels. मतलब क्या कि GIT में पेरिस्टाल्सिस कम होगा, ब्रोंकोडाइलेशन होगा और skeletal blood vessel रिलैक्स होंगे. Smooth muscle of peripheral blood vessel constrict होंगे. Depending on the endocrine gland कौन सा है इसके ऊपर डिपेंड है. It will increase or decrease the secretion of that gland. Positive inotropic, positive chronotropic effect on the heart, respiratory stimulation and decreases the appetite. Increase in the glycogenolysis. Glycogen का breakdown जल्दी होगा. Okay. And in the liver and skeletal muscle. Reduction in the free fatty acid from the adipose tissue. फैट को ब्रेक डाउन करेगा. लिपोलाइसिस होता है ना, बीटा 3 receptor will cause lipolysis. Decrease in the intraocular tension in case of your glaucoma. Glaucoma में जो intraocular tension बढ़ता है due to formation increased synthesis of aqueous humor in the eyes. Decrease in the intraocular tension. Epinephrine means noradrenaline. Epinephrine borate. What is epinephrine borate? It is a boric acid complex. Boric acid complex with the noradrenaline. Epinephrine borate. Diplevaprin. So that is a, remember ये क्या है? Diplevaprin. It is a pivaleic acid ester of epinephrine. Pivaleic acid ester of noradrenaline known as a diplevaprin. Okay. You can see over here structure of amphetamine. Epidiene, structure of epidiene. Now
You can see this carbon in the epitene is known as a chiral carbon because ये कार्बन क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप को अटैच है. यहाँ पे ये वाला एक ग्रुप है, हाइड्रोजन दूसरा, ये दूसरा. That's why epitene occurs in a two isomer. So epitene and pseudoepitene, epitene and pseudoepitene. इसका स्ट्रक्चर पूछा है एग्जाम में, GPAT 2022 स्ट्रक्चर पूछा है epitene. Deeply vaporin is nothing but it is, as I told you, it is a ester of pivalic acid. So it is a diester of pivalic acid with a noradrenaline. बाकी सब क्या है, स्ट्रक्चर noradrenaline का. देखो OH होता है ना. Epinephrine borate, it is a complex of boric acid with the epinephrine. ये क्या है, boric acid का complex, ये boric acid. Essential skeleton for sympathomimetic activity. A drug should be sympathomimetic when कोई भी ड्रग को sympathomimetic activity कब होगा, so it should have essential skeleton to show the sympathomimetic activity. कौन सा है ये, this is the essential skeleton. So it must have phenyl ring, okay, it must have methylene group, and it must have amine. So direct acting R3 R4, डायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग होते हैं उसमें जो R3 R4 है, मतलब ये वाले, both are the OH groups. Directly acting sympathomimetics will have R3 R4 OH और OCH3, OCH3. R2 रहेगा यहाँ पे OH. एग्जाम्पल क्या है उसका, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन एंड आइसोप्रेनालिन एंड डायजोलोन. इनडायरेक्ट एक्टिंग वाले नो सब्स्टिट्यूशन एट R2, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा. R2 R3 R4 ये नहीं है, किसमें नहीं है, इनडायरेक्ट एक्टिंग वाले जो है. सो आपने देखा है एम्फेटामाइन में OH ग्रुप्स नहीं है ना, इपिटेन में OH नहीं है. सो दिस इज एम्प्टी and at the indirect acting well, and R4 OH group and beta carbonate वो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. Mixed acting will have the structural feature of both. मिक्स एक्टिंग में जो है ना वो दोनों के स्ट्रक्चर रहेंगे, मतलब यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा. टारगेट्स नेक्स्ट, टारगेट फॉर न्यू डेवलपमेंट फॉर अल्टरिंग द एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम. क्या क्या टारगेट हो सकती है नए ड्रग के लिए. टारगेट फॉर अ न्यू ड्रग डेवलपमेंट फॉर अल्टरिंग द adrenergic nervous system. Drug that can alter the biosynthesis and storage of noradrenaline. Drug that can alter the metabolism, reuptake of noradrenaline. Already हो चुका है आपको, तो ये टारगेट से. Drugs that can increase the function of noradrenaline, that is by acting as an agonist, and decreases the activity by acting as an antagonist. Drug that can alter the pre-synaptic regulation of hormone action, तो alpha 2 agonist हो गए. Now first, drug affecting the biosynthesis. Biosynthesis कौन affect करता है भाई, तुमने देखा है मेट्रामिनॉल सॉरी first alpha methyl tyrosine which inhibit the action of tyrosine hydroxylase. एक अल्फा मिथाइल टायरोसिन होता है, that is known as a false amino acid. So alpha methyl tyrosine, so that inhibit the action of tyrosine hydroxylase. कि अल्फा मिथाइल टायरोसिन जो है ना वो नेटिव टायरोसिन नहीं है, it is a different. That's why it inhibit the tyrosine hydroxylase. That is the first step in the biosynthesis of cholesterol. Second होता है अल्फा मिथाइल डोपा, is known as a false neurotransmitter. अल्फा मिथाइल डोपा, इसको बोलते हैं अपन false neurotransmitter. मतलब ये अल्फा कार्बन है ना, डोपामाइन का स्ट्रक्चर एज इट इज लिखो, ये अल्फा कार्बन है, उसके ऊपर मिथाइल है, इसलिए अल्फा मिथाइल डोपा. सो अल्फा मिथाइल डोपा decarboxylase enzyme, okay, so it inhibit the decarboxylase enzyme and it will prevent the conversion of dopamine to dopa. Disulfiram inhibit the dopamine hydroxylase. Indirect acting agonist like tyramine is called as a false neurotransmitter because that is a precursor for adrenaline. Cocaine also increases the concentration of noradrenaline by interfering with its uptake. Bretylium tosylate नाम का एक ड्रग है, bretylium tosylate is a true uptake inhibitor of noradrenaline. Next आता है आपका
इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट, फॉर एग्जांपल एम्फेटामाइन है, पेंटेरामाइन है एंड इट्स कंजनसी, मेट्रामिनॉल का भी स्ट्रक्चर आपको है। सो एम्फेटामाइन, इपेड्रिन, dobutamine, clonidine. Clonidine is known as a central alpha 2 agonist. Centrally alpha 2 जो receptor होता है उसका on the presynaptic membrane. So it is an agonist to the alpha 2 and used in the hypertension to decrease the sympathetic output. Drugs affecting the metabolism of noradrenaline, MAO inhibitors. MAO inhibitors, monoamine oxidase inhibitor. इसके बारे में important drugs है, को पता ही होना चाहिए। इप्रोनियाजाइड, निकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, निकोटिनिक एसिड, डाइमिथाइल मिथाइल निकोटिनिक एसिड का ये एक्चुअली इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ निकोटिनिक एसिड, इज हाइड्राजाइड, आइसोप्रोपाइल हाइड्राजाइड, इप्रोनियाजाइड, आइसोप्रोपाइल हाइड्राजाइड ऑफ निकोटिनिक एसिड, सो दैट्स व्हाई इप्रोनियाजाइड। देन परगाइलिन, परगाइल और डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट, उनका सार important part ये direct acting agonist. So a sympathomimetic should have a structure like this. उसमें एक फिनाइल रिंग होना चाहिए, कैटेकोल न्यूक्लियस होना चाहिए, अल्फा एंड ए अमाइन होने चाहिए, अमाइन फंक्शन, और वो यहाँ पे जो अल्फा एंड कार्बन है बीटा कार्बन है, तो ये लेंथ इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा लेंथ होगा तो गलत हो जाए। तो the amino group aromatic ring should be separated by 2 carbon of the okay, the amino group and aromatic ring. So amino group कौन सा है ये वाला, amino group and aromatic ring, amino group and aromatic ring should be separated by 2 carbon atom. So यहाँ पे दो ही है, that is essential for activity. A good sympathomimetic drug should have aromatic ring, amino group, and in between that there should be 2 carbon atom. तो क्वेश्चन इसके ऊपर आता है आपको. So amino group and aromatic ring of the sympathomimetic should be separated with the 2 carbon atom chain, which is essential for activity. Presence of hydrogen group of the correct configuration. Presence of hydrogen group at the correct configuration. There is a LIGO should be LIGO on the beta carbon atom. यहाँ पे अगर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है या फिर OH ग्रुप है, यहाँ पे जो है ना, it should be LIGO, it should be LIGO, which will increase the agonistic activity, but agonistic activity is decreased if you add methyl group on alpha carbon atom. Presence of alpha methyl group increases the duration of action of and making the resistant to MAO. मतलब क्या, पहला रिक्विजिट है कि जो अमाइन ग्रुप है जो बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग, उसमें 2 कार्बन एटम का डिस्टेंस होना चाहिए। दूसरा रिक्विजिट है कि जो बीटा कार्बन एटम है उसके ऊपर जो अटैचमेंट रहेगा वो LIGO होना चाहिए, LIGO फॉर द एगोनिस्टिक एक्टिविटी। अगर आपने यहाँ अल्फा कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप अटैच किया, so that will decrease the agonistic activity but increase the duration of action as well as it will make more resistant compound to the MAO. समझ में आ रहा है आपको? Yes or no? Are you getting? थर्ड क्या है? Small substitution like hydrogen, methyl can be placed on the carbon without affecting the agonistic activity. मतलब यहाँ पे मिथाइल डाल सकते हो, हाइड्रोजन डाल सकते हो, इथाइल डाल सकते हो, so does not affect the agonistic activity. Hydrogen or methyl can be substituted on the nitrogen atom without altering the agonistic activity. तो ये नाइट्रोजन के ऊपर भी आप मिथाइल डाल सकते हो. नाइट्रोजन आटम must have at least one hydrogen atom on it. अगर आपने इसको क्वाटरनरी कर दिया तो एक्टिविटी कम हो जाएगी. It must have at least one hydrogen on this nitrogen. First structure is a phenylephrine. You can see over here, same phenylephrine. Trimethyl, oh sorry, same structure as that of the your catechol. बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे OH नहीं है, यहाँ पे OH होता और ये मिथाइल नहीं होता,
near about catecholamines. So phenylephrine, phenylpropylamine, 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 ये देखो एक प्रोपालामाइन, यहाँ पे अल्फा मिथाइल ग्रुप है इन एडिशन, मिथोक्सामाइन, मेओक्सामाइन, डाइमिथोक्सी ग्रुप है यहाँ पे, डाइमिथोक्सी, मिथोक्सा, डाइमिथोक्सी, नेफाजोलिन, नेफाजोलिन, नेफाजोलिन में क्या है, नेफा फॉर नेफ्थलीन, ये जो रिंग है उसको बोलेंगे नेफ्थलीन रिंग, ये जो रिंग है उसको बोलेंगे अपन थायाजोल, इमिडाजोल 1,3 नाइट्रोजन, 1,3 नाइट्रोजन इमिडाजोल। सो इसका आईपैक नेम आपको याद रखना है, आ सकता है इसका। सो इसको बोलेंगे कार्बन नंबर, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे वो ओके, दिस इज 1 कार्बन नंबर 1, दिस इज 2 naphthalene 1 methyl, so 2 naphthalene 1 methyl 4 polydihydroimidazole, naphthalene, naphtha for naphthalene ring and zoline for imidazolene ring, imidazolene ring है। then xylomethazolene, xylo मतलब क्या, xylene ring, xylene मतलब क्या, benzene ring plus methyl, इसको बोलेंगे अपन xylene ring, xylomethazolene, azolene मतलब क्या, imidazolene है इसमें, xylo मिथ्या, मिथ्या मतलब यहाँ पे देखो टर्शरी ब्यूटाइल, स्ट्रक्चरल फीचर आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। कि xylomethazolene में क्या है, xylo मतलब xylene रिंग है, एजोलिन मतलब इमिडाजोलिन रिंग है, जेनेफेम मतलब नेफ्थलीन रिंग, एजोलिन मतलब इमिडाजोलिन रिंग, वैसे ही xylo मतलब xylene रिंग, ओके, मिथाजोलिन, मिथा मतलब ये टर्शरी ब्यूटाइल ट्राइमिथाइल, याद रख सकते 3 मिथाइल को, and then azolene. So tertiary butyl nomenclature देखो, tertiary butyl 3, 1 2 3, tertiary butyl 3 4 hydroimidazole methyl phenol, alphabet name उसका. So these phenylephrine, phenylpropylamine, then naphthalene, then xylomethazolene, they are all are used as a nasal decongestant in case of your जब आपको सर्दी खांसी होता है उस टाइम पे जल्दी कंसिस्ट, न्यूरो कोल्ड एंड फ्लू, और सार ऑफ बीटा एगोनिस्ट, वो क्या है, अल्फा एगोनिस्ट है। सो व्हाटएवर वी आर सीन, सो दे आर नोन एज अल्फा एगोनिस्ट, फिनिलेप्रिन, निलोप्रोपिलामाइन, मिथोक्सामाइन, नेपेजोलिन, xylomethazolene, all they are the selective alpha agonist, so that's why they are used as a nasal decongestant, alpha agonist। वो सारा बीटा एगोनिस्ट, पहले एगोनिस्ट देखेंगे बाद में एंटागोनिस्ट देखेंगे, सारा बीटा टू एगोनिस्ट। कॉमन स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, अगेन स्ट्रक्चरल फीचर सेम, स्ट्रक्चरल फीचर्स शुड बी सेम। हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट अ पैरा और मेटा पोजीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिविटी। यहाँ पे जो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मेटा पोजीशन पे होना चाहिए, फिर पैरा पोजीशन। सो OH group at meta or para is important for activity. Methyl on alpha carbonate increases the selectivity for bronchial beta 2 receptor, मतलब यहाँ पे मिथाइल ऐड हो गया ना, that will act a good beta 2 agonist. Substitution with one of the hydroxyl group on the phenyl ring creates a hindrance to the metabolism by compound, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके ऊपर अगर और कोई सब्स्टिट्यूशन किया, जैसे फॉर एग्जांपल मिथॉक्सी डाल दिया फिर, या फिर मिथाइल अल्कोहल डाल दिया, that will create a hindrance for the compound to metabolize the compound. Then yohimbine, napazolene, perplexan are the example of alpha 2 agonist. ये आपने योहिम्बिन का जो है अल्फा 2 एगोनिस्ट है, पर वाला जो napazolene देखा है वो अल्फा 2 एगोनिस्ट है, बट बीटा 2 एगोनिस्ट का सार ये सिर्फ 3 पॉइंट से आता है। The OH group should be at either meta or para position on the critical ring. Then substitution at alpha increases the selectivity for beta 2 receptor, and substitution of this OH will
increase the hindrance for the metabolism count. Selective beta 2 agonists, they are used in the asthma. So example is salbutamol and terbutaline. Salbutamol and terbutaline. Salbutamol, terbutaline. So it is structure of terbutaline. Ter for tertiary. Tertiary butyl amine. Tertiary butyl amine. Okay, tertiary butyl amine. Ter for tertiary butyl amine. 5 into tertiary butyl amine. 5 कहाँ पे? Carbon number 1, 2, 3, 4. This is another carbon number 5. So 5 into tertiary butyl amino, 1 hydroxyethyl. Okay, tertiary butyl amino, 1 hydroxyethyl. ये जो है hydroxyethyl, ये वाला 1 hydroxyethyl benzene 1,3 डाल. That is IUPAC name of terbutaline. अभी terbutaline का स्ट्रक्चर आपको याद कैसे रखना है? टर मतलब क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन. टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन. ठीक है, कैटेकोल न्यूक्लियस तो होगा. Then salbutamol. Okay, structure again 4 into tertiary butyl amine. Tertiary butyl amine 4. इसको 1 बोल लेंगे. 2, 3, 4 into tertiary butyl amino, 1 hydroxyethyl. ये hydroxyethyl connector into 2. ये क्या है? 2 hydroxyethyl phenol. 2 hydroxyethyl phenol. ये 2 into hydroxyethyl है phenol. ये होगा इसका hypermine. Salbutamol. Both are used in the treatment of asthma. Then remember, bambuterol is the drug. Bambuterol is another drug which is a prodrug of this terbutaline. When we were discussing about the sympathomimetics, at that time I have told you. सार ऑफ अल्फा ब्लॉकर. तो अभी हो गए अल्फा एगोनिस्ट, बीटा एगोनिस्ट. नेक्स्ट होता है अल्फा ब्लॉकर्स, अल्फा एंटागोनिस्ट. These are very important. Beta blockers, they are important. Okay. Now, general structure for alpha blockers should have these features. Okay. Is amino, ethyl, and then X. So, first, beta haloalkylamines acts like a nitrogen mustard in the antinuclear. This general formula is given below. ये phenoxybenzamine. ये R मतलब क्या? यहाँ पे बेंजीन देखो. phenoxybenzamine, diamenamine, phenoxybenzamine, dibenamine. Dibenamine में क्या होगा? N dibenzyl N बीटा क्लोरोइथाइल. यहाँ पे क्लोरोइथाइल ग्रुप है. दोनों यहाँ पे क्या है? बेंजीन रिंग है. दोनों R में बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्लोरोइथाइल, तो बन जाएगा आपका phenoxybenzamine. तो यहाँ पे haloalkylamines क्लोरीन है. यहाँ पे X मतलब नेट. आर्गोटॉल्क्लोइड्स होता है अल्फा पे. आर्गोटॉल्क्लोइड्स आर्गोस्टिन, आर्गोप्टिन, आर्गोविन. सो उनका स्ट्रक्चर तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, नॉट रिक्वायर्ड. दे आर आल्सो हैव एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट. थर्ड होता है इमेडाजोलिन्स. दे आर स्ट्रक्चरल सिमिलर. उसमें होता है टोलेजोलिन, पेंटोलामाइन, इडाज़ोज़ैन. नेक्स्ट में बेंजोडाइज़ेपिन और बेंजोडायोक्सेन्स और डायबेंजोजेपिन. इसमें प्राजोसिन, इनाजोलिन, प्राजोसिन नहीं, क्विनाजोलिन derivative. Its congener. They are the selective alpha blockers. You can see alpha blockers. First means tolazolin. Tolea मतलब क्या? Toluene group. Tolea मतलब क्या? Toluene. So benzene is methyl. Toluene group. Tolea. Zolene मतलब क्या? Imidazoline. ये imidazoline. Tolazoline. So 2 benzyl 4 dihydro 1 hydroxyimidazoline. 2 benzyl. इसको 1 2 3 1 3 नाइट्रोजन. 2 में क्या है? बेंजील. बेंजील मतलब फिनाइल मिथाइल. बेंजील 4 डायहाइड्रो, ये 4 डायहाइड्रो इमिडाजोल टोलेजोलिन. ओके, आर यू गेटिंग और नॉट? स्ट्रक्चर ऑफ टोलेजोलिन इंपॉर्टेंट है, आईपैक नेम इंपॉर्टेंट है, यस और नो? देन नेक्स्ट होता है फिनॉक्सीबेंजामाइन. फिनॉक्सीबेंजामाइन में देखो नाम में लगा फिनॉक्सी, तो इसमें क्या रहेगा? फिनॉक्सी ग्रुप रहेगा.
ये ले लो बेंजामाइन, तो बेंजीन रहेगा और अमाइन रहेगा, ये बेंजामाइन। तो एन बेंजिल, ये एन इंटू बेंजिल मतलब फिनाइल, फिनाइल टोली, फिनाइल मिथाइल, एन बेंजिल, एन इंटू 2 क्लोरो इथाइल, ये 2 क्लोरो इथाइल, एन बेंजिल एन 2 क्लोरो इथाइल, 1 फिनॉक्सी प्रोपेन 2 अमाइन। इसका इफेक्ट नेम आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। एन बेंजिल, ये एन बेंजिल, एन 2 क्लोरो इथाइल, 1 फिनॉक्सी, ये 1, ये कार्बन 1 लिखा है, कार्बन इज 1, फिनॉक्सी सॉरी, ये फिनॉक्सी इथाइल, पूरा फिनॉक्सी इथाइल, प्रोपेन 1 2 3, प्रोपेनम, प्रोपेन अमाइन, ये प्रोपेन अमाइन, फिनॉक्सी, एन बेंजिलियन 2 क्लोरोइथाइल, 1 फिनॉक्सीप्रोपेन 2 अमाइन, 1 फिनॉक्सीप्रोपेन 2 अमाइन, ये होगा इसका फिनॉक्सीबेंजामाइन। फिनॉक्सी मतलब फिनॉक्सिलिन, बेंजा मतलब बेंजिल रिंग, एंड अमाइन मतलब अमाइन मतलब प्रोपेनामाइन। सो फिनॉक्सीबेंजामाइन क्या है? अल्फा ब्लॉकर, फिनॉक्सीबेंजामाइन। देन पेंटोलामाइन, पेंटोलामाइन ये देखो, टोला, टोला मतलब क्या? टोलिन, टोलिन कहाँ पे है? इमेडाजोल, ये तो प्रूफ है इसमें, इमेडाजोल डेरिवेटिव है 1 2, सो 3 into 4 5 डाइहाइड्रो 1 हाइड्रोक्सी इमेडाजोल, ये 1 4 5 डाइहाइड्रो 1 इमेडाजोल, 2 in मिथाइल पैराटोलिल अमाइनो, ये पैराटोलिल अमाइनो, ये पैराटोलिल अमाइनो पूरा है, फिनॉल, पेंटोलामाइन। देन प्राजोसिन, selective alpha 1 blocker, प्राजोसिन, ये क्या है? क्विनाजोलिन डेरिवेटिव, क्विनाजोलिन, रिमेंबर क्विनाजोलिन रिंग, ये जो है ये इज अ क्विनाजोलिन रिंग, क्विनाजोलिन रिंग। क्विनिन रिंग में क्या है कि 1 3 नाइट्रोजन, तो क्विनिन रिंग में सिर्फ 1 नाइट्रोजन होता है, क्विनाजोल, एजोल मतलब और एक नाइट्रोजन, क्विनाजोलिन रिंग। ओके, नाउ प्राजोसिन, ओके, स्ट्रक्चर क्या है उसका? आइपेग नेम मिथेनॉन, CH3 डबल बॉन्ड CH3CO, तो मिथेनॉन, मिथाइल कीटोन इस पढ़ेंगे। देन 4 into 4 amino 6 7 dimethyl quinazolin, okay, so ये मिथाइल इन 1 कार्बन 2 3 4, ये 4 आएगा, 4 into 4 4 into 4 into 4 अमाइनो, ये इसका 4 आ गया, इसके बाद में 1 2 3 4 into 4 अमाइनो डायमिथॉक्सी, ये देखो डायमिथॉक्सी, पूरा ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? क्विनाजोलिन किस कहाँ पे अटैचमेंट है? सेकंड कार्बन 2 इल पिप्राजिन, ये जो लेंगे 1 4 नाइट्रोजन, इसमें से पिप्राजिन, पिप्राजिन 1 इल, फ्यूरान 2 इल, फ्यूरान ये रहे फ्यूरान वाला। सो देखो 4 4 अमीनो 6 7 डायमिथॉक्सी क्विनाजोलिन, तो 6 7 डायमिथॉक्सी क्विनाजोलिन, 4 अमीनो 6 7 डायमिथॉक्सी क्विनाजोलिन, कहाँ पे? 4 में, किसके 4 में? पिप्राजिन, पिप्राजिन 1 इल, पिप्राजिन 1 इल मतलब यहाँ पे, और ये क्या है? फ्यूरान 2 इल, ये कार्बन को, ये ऑक्सीजन 1, ये 2, फ्यूरान 2 इल, लास्ट में क्या बचा है? मिथेनॉन, मिथेनॉन। सो प्राजोसिन, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर, प्रा फॉर पिप्राजिन, प्राजोसिन। इसमें याद रखना है कौन सी रिंग होती है इसमें? क्विनाजोलिन रिंग, 3 रिंग है इसमें, देखो यार, स्ट्रक्चरल फीचर याद रखो आप, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है?
phenazolene ring, piperazine ring, then furan ring. ठीक है, there are 3 kind of rings heterocycle in the prazosin structure. Then doxazosin कुछ इस तरीके का होता है, टेराजोसिन. तो यहाँ तक सबसे तो ये जो सूत्र रहेगा उस सब में जो सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है जोसिन वाले सब में सेम हो रहा है, बस यहाँ पे अटैचमेंट अलग है. इसमें क्या है, डोक्साजोसिन मतलब डायोक्सिन रिंग है. इसमें डोक्साजोसिन मतलब डायोक्सिन, बेंजीन डायोक्साइड. टेट्रा टेराजोसिन मतलब क्या, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान है. इसमें क्या है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, टेराजोसिन. नेक्स्ट आता है बीटा ब्लॉकर्स. सार ऑफ बीटा ब्लॉकर्स, सार ऑफ बीटा ब्लॉकर्स. तो फिनोलिक OH जो बेंजीन के ऊपर जो फिनोलिक फिनोलिक OH इज इंपॉर्टेंट. रिमूवल ऑफ 4 OH मतलब OH of benzene ring result into the retention of only alpha agonistic activity. जो catechol nucleus होता है, so in the catechol nucleus that OH group is important and removal of one OH result in the only alpha agonistic activity. This phenylephrine methoxamine. Removal of another OH result in the loss of alpha as well as beta agonistic activity. मतलब बीटा ब्लॉकर्स में ना वो OH रहना चाहिए. थर्ड, OH can be replaced by sulfonamine, S2NH2, SO2NH2, sulfonylamine, so known as sotagnol, or OHCH2 in presence of that is in sulfatamide. 4OH replacement leads to loss of total activity of compound and it becomes antagonist. 2 carbon atom side chain is important for benzene. Benzene carbon should be have R absolute configuration. 2 carbon atom side chain is important. Benzene carbon should have R configuration. General structure same है. Alcoholic OH can be replaced by ammonia in S3 groups or OHCH2 methyl alcohol group, small hydrogen or methyl group substitution on the nitrogen atom. NH amine group उसके ऊपर अटैच किया, इन्हें CH3 will produce alpha agonistic activity. Larger substitution, bulky substitution like dimethyl ethyl, so the isopropyl, so leads or aryl leads to beta agonistic activity. Already beta blockers can be classified into 2 groups. First beta blockers, they are known as aryl ethanolamines. GPAT 2019 में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर. सेकंड वन इज known as aryl oxy propanolamines. मतलब एक में CH2 वही ब्रिज है, इथाइल ब्रिज 2 कार्बन एटम. एक में क्या है, 3 कार्बन है, प्रोपेनोलामाइंस. फर्स्ट वन इज अराइल मतलब बेंजीन, इथेनोलामाइंस मतलब देखो बेंजीन यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कार्बन एंड यहाँ पे नाइट्रोजन. रिप्लेसमेंट ऑफ कैटेकोल हाइड्रोजन ग्रुप बाय क्लोरीन गिव्स यू डाइक्लोरोआइसोप्रोपेनॉल. कैटेकोलामाइंस का एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपने रिप्लेस किया या फिर रिप्लेस किया क्लोरीन से, तो डाइक्लोरोआइसोप्रोपेनॉल. It was a classical beta blocker but not used clinically because it is a carcinogenic. डाइक्लोरोआइसोप्रोपेनॉल इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे है, डाइक्लोरोआइसोप्रोपेनॉल. It is a carcinogenic. It was a classical beta blocker. Replacement of hydroxyl group with electron-rich phenyl ring at a 3,4 gives proethanol. Much better beta blocker than previous one. ये दोनों क्लोरो रिप्लेस करना है आपको, तो मिलेगा proethanol, which is much better beta blocker. Nitrogen substitution. So NN disubstituted compound is inactive. Activity is maintained if phenylethyl or hydroxyphenylethyl or methoxyphenylethyl को पाने का main part of molecule.
मतलब यहाँ पे जो है ना ये वाला अमाइन पार्ट, इसके ऊपर एक्टिविटी एन ड्राइव सब्स्टिट्यूट कंपाउंड इज इनएक्टिव। अगर दोनों भी यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन नहीं, यहाँ पे भी अपन सब्स्टिट्यूशन करेंगे, दैट इज इनएक्टिव। ठीक है, तो एक ही जगह पे रहना, एक वन हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर अमाइन फंक्शन। So which compound are active? Phenyl ethyl hydroxyphenyl ethyl or methoxyphenyl ethyl groups are added to amine part of the molecule. Cyclic alkyl substitution are better than open chain carbon नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक अगर डालेंगे इसके ऊपर यहाँ पे, दैट इज अ बेटर देन ओपन चेन। One can extend the total length of carbon is up to 4 without terminal phenyl carbon। यहाँ पे total length कितना होना चाहिए 4। We can extend the length of carbon up to 4 carbon। Reduction of the one ring to give tetraline analog does not affect the activity। अभी एक रिंग निकल दिया ना अपने यहाँ पे, doesn't matter, tetraline डेरिवेटिव मिलेगा और that is a does not affect the activity। Replacement of phenyl ring by anthracene or phenanthrene result in the disadvantage। तो जो phenyl ring है ये अपने अगर और एक एंथ्रासिन मतलब और एक रिंग डाल दिया तो that will give disadvantage or that will not give you any advantage। Hydroxyl group at a phenyl ring can be replaced by methyl sulfonamide to give other derivative like sutalol। Hydroxyl group on a phenyl ring can be replaced by methyl sulfonamide to give derivative like sutalol। तो यहाँ पे जो phenyl ring के ऊपर जो वही जो ग्रुप था यहाँ पे that is replaced by S3SO2NH sulfonamide to give sutalol। यहाँ पे सोटा मतलब क्या, सल्फोनेलामाइड, सुटेलॉल। In this series methyl sulfonamide can be replaced by nitro। methyl sulfonamide जो था नाइट्रो ग्रुप से भी रिप्लेस कर सकते। aryl oxypropanolamides after the withdrawal of proethanol, it is aryl ethylamine which was causing tumor in the mice। Later on modification of this compound is done with a potent beta blocker known as a propranolol was developed। A prototype of beta blocker, that is a propranolol, now it is also converted into a metabolite known as a 4-hydroxypropranolol। अभी तक जो है ना वो आउटडेटेड से कंपाउंड थे, whatever we discussed, now these compounds they are used। Most of the derivatives of this series consist of a substituted phenyl ring rather than naphthyl ring। बहुत सारे इसमें ऐसे कि phenyl ring substituted naphthyl ring से। Catechol ring is replaced by phenyl ether in case of oxyphenol। Catechol ring can be replaced by phenyl ether। ये जो वाला जो रिंग है यहाँ पे में ये it can be replaced by phenyl ether in case of oxyphenol। इस स्ट्रक्चर को मैं डाइमिथाइल अमाइनो इथाइल, डाइमिथाइल अमाइनो प्रोपाइल है इसमें, बिकॉज अराइल है ना, ये क्या है अराइल प्रोपेनोलोमाइन, अराइल ऑक्सी प्रोपेनोलोमाइन, ये इसको बोलेंगे अराइल रिंग, अराइल ऑक्सी, ये जो पार्ट है अराइल ऑक्सी ओके प्रोपेनोलोमाइन 1 2 3 प्रोपेनोलोमाइन आइसो प्रोपाइल ग्रुप यहाँ पे आइसोप्रोपाइल। तो प्रोपेनोल का स्ट्रक्चर ये है, that is a prototype for beta blocker, and in the propanolol you have naphthalene ring, in the propanolol you have naphthalene ring and 4-hydroxypropanol the active metabolite of propanol। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होता है रिंग में, 4-hydroxypropanol is active। So removal of this ring and replacement of this ring with the phenyl ether that will give you oxyphenol and replacement of this with the ये जो है ring with the sulfonamide that will give you sotalol। We have seen this। Replacement of this ring with the amide will give you labetalol। Replacement of this ring with the indol will give you pindolol, then benzbendolol, then
replacement of this ring with a naphthalene will give propranolol. N substitution should be bulky enough to have affinity for the beta receptor. मतलब ये जो यहाँ पे जो substitution है N substitution should be bulky enough to have a beta blocking effect. Substitution, okay. Substitution of methyl chloride or methoxy or nitro on the phenyl ring at a second and third position is favored than fourth position. The substitution at this position is favored. ये position पे favored की, ये position पे favored नहीं की. Alkenyl or adrenergic group at a ortho position of phenyl ring is good for activity. Ortho position के ऊपर alkyl group डाल दिया, alkaline oxy group डाल दिया. On a phenyl ring there is a good for activity. This is for example oxyphenolol and alpranolol is a ring open analog of propranolol. Long alkyl chains are less effective. Isopropyl tertiary is optimum for the activity and nucleophilicity of the amine group for the receptor affinity. मतलब क्या यहाँ पे जो है बोले isopropyl और isobutyl is optimum for this activity. उससे ज़्यादा नहीं कर सकते. Propranolol is a highly lipophilic or lipid soluble drug which penetrate easily in the CNS, precipitate the undesired effect, adverse effect, say like cardiac depression in addition to its beta blocking activity. Now this can be avoided by introduction of polar groups. Okay. Methane sulfonamide derivative known as a practical. No cardiac depression side effect. It was the first cardioselective beta blocker. Practical was the first cardioselective beta blocker. उसके बाद में ओके है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स कौन है? पहला है प्रोप्रानोल, इसमें होता है नैप्थेलिन. याद रखो आईपैक नेम पूछेगा आपको. प्रोप्रानोल ओके प्रोप्रानोल मतलब प्रोपेनालोल है. कौन सा प्रोपेनालोल? एक कार्बन दो कार्बन 1 आइसोप्रोपाइल अमाइनो 1 आइसोप्रोपाइल अमाइनो 1 आइसोप्रोपाइल अमाइनो 1 देखो 1 2 3 कार्बन है और अल्कोहल है प्रोपेनॉल. So 1 into isopropyl amino 3 naphthalene oxy propane 2 wall, that is a name of propanol. इसमें naphthalene ring है ना, propanol है 3 कार्बन एटम 1 2 3 propanol. Dimethyl amino 1 into dimethyl amino 1 into dimethyl या फिर isopropyl amino 3 into methyl oxy propane 2 wall. दो पोजीशन पर अल्कोहल है तो propane 2. It is a non-selective beta blocker. Naphthalene ring in the structure non-selective prototype isomer जो होता है इसका there is a more active 100 times more active than dextroisomer. It also has a membrane stabilizing effect on heart. ये antihypertensive भी है, ये arrhythmia में भी यूज किया जाता है. naphthalene ring नोडेलोल मतलब क्या? नेक्स्ट डेरिवेटिव होता है नोडेलोल. तो एज इट इज स्ट्रक्चर लिखना है अपने को इसका प्रोप्रानोल का एज इट इज स्ट्रक्चर लिखो. बस यहाँ से डबल बॉन्ड हटा दो, ये रिंग्स हटा दिए और यहाँ पे कैटेकोल डाल. अगेन नोडेलोल इज एंटीहाइपरटेंसिव, naphthalene ring is there, no double bond and 2 OH groups नोडेलोल. Am I audible to you? Yeah, audible आएगा. Next one is a non-selective beta blocker. Non-selective beta blocker with additional alpha blocking activity. Labetalol. Non-selective beta blocker with the additional alpha blocking activity along with the non-selective beta blocker activity. So it is optically active. It has a 2 chiral carbons. इसको 2 chiral carbons है तो इसके isomers कितने बनेंगे? इसके 4 isomers बनेंगे. Labetalol 2 hydroxy 5 into hydroxy 2 hydroxy A1 2 hydroxy 5 into
ये कार्बन एटम 1 है, 2 हाइड्रोक्सी 5 इंटू 1 हाइड्रोक्सी, ये 5 इंटू है 1 हाइड्रोक्सी फिनाइल ब्यूटेन, फिनाइल ब्यूटेन अमाइन, फिनाइल ब्यूटेन 2 इल अमाइनो इथाइल, ये अमाइनो, इसके बाद में इथाइल बेंजामाइड, ये बेंजामाइड ऐसे बेस किया जाता है। लेपिडोलॉल उसमें बेंजामाइड, इट इज अ बेंजामाइड डेरिवेटिव, याद रखना है आपको, बेंजामाइड, बेंजीन रिंग प्लस अमाइड, CONH2 अमाइड, बेंजामाइड 2 हाइड्रोक्सिल 5 into 1 hydroxy 2 4 2 into 4 phenyl butyl, 4 phenyl butyl, ethyl benzamide, so lapidoll। नेक्स्ट होता है एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी विद द नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर एक्टिविटी, कार्बिडायलॉल, इसमें कार्बी और कार्बाजोल रिंग, कार्बी मतलब कार्बाजोल रिंग, दिस इज नोन एज अ कार्बाजोल रिंग, open to all telamino methoxyphenols, 1 into 9 hydroxycarbazole 4 in oxy, 1 into 1 में क्या है, कार्बन नंबर 1 ये है, 1 into 9 हाइड्रोक्सीकार्बाजोल 4 ऑक्सी, मतलब यहाँ पे 4 है ऑक्सी इन 3 into 2 2 methoxyphenoxy 3 into 2 2 2 methoxyphenoxy इथाइल अमाइनो, लास्ट में प्रोपेन टू 1, ये वाला प्रोपेन, तो कार्बाइडायलॉल, आपको यहाँ पे बस कार्बाइडायलॉल में याद रखना है, यहाँ पे कार्बाजोल रिंग होगा, कार्बाजोल। पिंडोलॉल तो बहुत इजी है, पिंडोलॉल मतलब इंडोल रिंग हो गया, पिंडोलॉल में इंडोल रिंग है, स्मॉल ऑल अगेन इज अ कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, मिथाइल 3 4 मिथाइल मिथाइल 3 2 हाइड्रोक्सी 3 आइसोप्रोपाइल अमीनो, 2 हाइड्रोक्सी 3 आइसोप्रोपाइल अमीनो, प्रोपोक्सी, ये प्रोपोक्सी फिनाइल, प्रोपोक्सी फिनाइल, प्रोपियोनेट, प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव, ये प्रोपियोनेट स्मॉल, देन इट इज अ सिलेक्ट कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट होता है अटेनोल, तो इसमें पैरा अमाइडो मिथाइल फिनोक्सी 3 आइसोप्रोपाइल अमीनो प्रोपेनॉल, इज हाइपरकिन, देखो यहाँ अटेनोल 2 into 2 को आप एसिटामाइड 2 into 2 हाइड्रोक्सी 3 आइसोप्रोपाइल अमीनो 2 हाइड्रोक्सी 3 आइसोप्रोपाइल अमीनो प्रोपोक्सी फिनाइल एस्टामाइड, ये अटेनोल में एस्टामाइड होता है, याद रखना है, एस्टामाइड और फिनोक्सिलिन होता है, इसे इंडोलॉल में इंडोल रिंग होता है, स्मॉलॉल में क्या होता है, फिनोक्सिलिन प्लस प्रोपियोनेट, स्मॉलॉल, कार्बाइडोल में कार्बाजोल रिंग होता है, रिंग याद रखो, एटलीस्ट स्ट्रक्चर नहीं याद रख सकते, नोडेलॉल में नेप्थलीन प्लस नो बॉन्ड्स एंड 2 अल्कोहल, नेप्थलीन, और प्रोपेनॉल में क्या है, नेप्थलीन रिंग है, प्रोपेनॉल में नेप्थलीन रिंग, नोडेलॉल में ये रिंग में नो डबल बॉन्ड्स एंड अल्कोहल, नो डबल, देन लेपिडोलॉल में यहाँ पे बेंजामाइड, ठीक है, यहाँ पे बेंजामाइड है, लेपिडोलॉल में बेंजामाइड है, बाद में कार्बिडाइलॉल में कार्बाजोल डेरिवेटिव, कार्बाजोल रिंग है, पिंडोलॉल में इंडोल रिंग है, स्मॉलॉल में यहाँ पे फिनाइल रिंग फिनोक्सिलिन प्लस यहाँ पे प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव प्रोपियोनेट, ठीक है, और बाद में एटेनोलॉल में फिनोक्सिलिन प्लस एसिटामाइड, ऐसा करके ही आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। देन बेटाक्सोलोल साइक्लोप्रोपाइल रिंग, साइक्लोप्रोपाइल मेथॉक्सी फिनोक्सी 3 4 1 into 4 into 2
1 इंटू 4 इंटू 2 मतलब ये 1 इंटू 4 मतलब ये इंटू 2 मतलब ये है साइक्लोप्रोपाइल मिथॉक्सी साइक्लोप्रोपाइल इथाइल ये वाला इथाइल फिनॉक्सी ये वाला फिनॉक्सी 3 आइसोप्रोपाइल अमीनो 1 2 3 isopropanol amine propane to all that is a betoxolol then metoprolol it is a prototype for cardiovascular beta blocker क्वेश्चन इसका ऊपर आ चुका है metoprolol का स्ट्रक्चर जीपैट 2019 में क्वेश्चन पूछा है इसके स्ट्रक्चर पे okay it is a prototype for cardiovascular beta blocker metoprolol का स्ट्रक्चर जीपैट 2019 में पूछा है metoprolol okay 1 into isopropyl amino 1 2 3 1 2 3 so 1 into isopropyl amino 3 मतलब ये है इसमें क्या है ये सब है इसमें क्या है भाई 4 मतलब ये है 4 into 2 2 methoxy phenoxy propane 2 तो metoprolol methoxyethyl है ना metoprolol मेटो मतलब methoxyethyl metoprolol प्रो मतलब प्रोपेन तो बाकी ये सब यहाँ पे फिनॉक्सी ले लीजिए बिसोप्रोलॉल अगेन इट इज अ हाईली कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर बिसोप्रोलॉल भी क्या है कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है बिसोप्रोलॉल इसमें दो आइसोप्रोपोक्सी इथॉक्सिलिन होगा प्रोपेनॉल 1 into 4 into 2 आइसोप्रोपोक्सी इथॉक्सिन के 1 into 4 into 2 into आइसोप्रोपोक्सी ये हो गया ये हो गया इथॉक्सी मिथाइल ये हो गया मिथाइल फिनॉक्सी ये हो गया फिनॉक्सी 3 into डाइमिथाइल अमीनो और आइसोप्रोपाइल अमीनो propane to all that is a bisoprolol then timolol it is not used systemically it is only used for the treatment of glaucoma topically timolol okay timolol इसमें याद रखना है कौन सा रहेगा यहाँ पे thiazole रहेंगे so this was regarding the symptomatic test इसमें किसी को कोई डाउट हो तो कुछ